The environment etymologically means, the literal meaning when you look at is the surroundings. And when you observe the surroundings, what we find that there are so many things which surround an organism. So organism living in a place, the dwelling place of that organism is known as the habitat, and where the organism lives, in the surrounding of that organism, many things lives, and the organism is in a relationship with that things. That things we called environmental factor or ecological factor or simply factors, and that factors affect the life of an organism. Life of organism means the growth of the organism, the reproduction of that organism. Okay, even the reproductive cycles or the shell divisions or crossing overs, pigmentation, phenotypes, appearance of that organism. So in various way the organisms are affected by such things you must keep in mind. Now when you look at so what I have said, that any external force or substance or conditions, what I have said, any external force or substance or condition which surrounds and affects life of an organism in any way, okay, become the factor, and such factor are known as environmental factors. So it may be certain forces, it may be a certain substances, or it may be the conditions, okay, external condition or substances, or what I have said, it may be the forces, some external forces which affects the life of an organism directly or indirectly. It is known as what? It is known as the environmental factor or ecological factor or simply factors. So I had started in my previous lecture these ecological factors. When you look at the ecological factors, there are various ways to classify these factors which affect the life of an organism. Okay, so once you look at, there are multiple opinions given by the different ecologists regarding this, okay, regarding this. So when you look at the opinion of the Austins, what we can say it, so in the view of Austin, the opinion of the Austin reveals in 1948 that the environment is complex of variable factors or the causes which includes. So according to Austin, what are the ecological factors which affect the life of an organism directly or indirectly? Okay, these are the factors. Among that factors, substances which affect the life of an organism, the substances like soils or water, etc. Austin stated that certain conditions also affect the life of an organism, like the amount of the lights or the radiant energy which led to the heating of the surface, to the temperature play a very significant role. Okay, amount of light also play a significant role. So it creates a conditions, okay, whether the day length is proper, you can say the insolation, amount of insolation received by the surface is high, then the condition is different. If the amount of insolation received by Earth's surface is low, the condition is different. Okay, when you move along the hilly or mountainous areas, we find the temperature variation from sea levels towards the hilly area as you move along the topography or altitude. So what we find that there is a differences in temperature. When you move from equatorial regions towards the polar regions,
when you observe the latitudinal variation, along the latitudinal variation, you also find the temperature differences, which create a unique condition. In that conditions, when you look at the type of vegetation or the fauna, we find differences in that. The adaptability of that organism is different because the condition is different. So this is the conditions. Now forces like winds, as we have learned in the climatology, that what are the factors which led to genesis of wind. The major factor is the pressure difference. The pressure gradient forces are responsible for the genesis of the wind. So these forces also affect the life of an organism. Okay, when the wind speed is high, as you know, in the cyclone the wind speed is high, it uprooted the plant. Okay, affect the life. Okay, and there are various the wind is also a help in pollination of a plant. So pollination led to the reproductions. Okay, so basically when you look at, this is the force, gravity is another force. Okay, so few organisms are positively geotropic, they move towards the gravity, but various organisms are negatively geotropic. When you look at the plants, the root of the plants moving downward while the stem of the plants moving upward. Okay, so the roots is positively geotropic. It moves along the gravity, but opposite to gravity, what we find, the growth of stems, तना ऊपर की तरफ ग्रो करता है, negatively geotropic. So gravity also. Now organism is living. Okay, one organism is living in the surrounding of another one. Okay, so that organism also affect the life of another organism, and the growth, reproductions, competitions. There are different type of interactions which is going on in the environment between the organisms. The relationship may be the negative or positive. The relationship which mutually help to grow the organism and reproduce, okay, and survive in a particular conditions of environment, while some you can say the conditions which is created by the organism, or you can say relationship, is negative, like predation. In predations, when you look at the relationship between prey and predator, one organism having the benefits, another harmed, killed by the predator, the prey always killed by the predator. So what we find that there are various relationship exist between the organism, and that relationship may be positive or negative. We will further learn different kind of interaction between the organism of a same species. We call that intraspecific relationship, and we also learn the interspecific relationship between the organism, different species. When we learn the relationship between the organism of different species, we call it interspecific relationship. So further I will explain. So the livings are known as biotic factor, but according to Austin, the organisms like plant, animals, etc. are also the factors. Okay, and now the time is also a factor, very important. Environmental factors, because gradually with the time, what we find that the change in the organisms density, organism distributions. Okay, because conditions change, condition over the earth is not static, it changes along with the time. Okay, and the major factors apart from that, when you look at the modern ecologist, add the human, which altered the environment. So apart from that, when you look at, this is the opinion of Austin, these are the factors which affect the organismic life. Apart from that, when you look at the another ecologist opinion about the factors, okay, Meyer in 1959, what he said there are various environmental factors, and he clubbed the environmental factors into different heads. He said that soil is a very important factor, the water is another factor, the temperature is the crucial factor. So you can find some common factors which is enshrined in the Austin ideas as well as Meyer ideas, and the light, atmosphere, fire,
and biotic factors. I will explain later on all these factors. I will club in the major heads. So what I am discussing right now, the different opinions which exist in ecology regarding the factors. Okay. Now, when you look at, if you club these factors, majority of ecologists believes in this classification. Okay. So ecological factors may be the abiotic and the biotic. As I have said, the abiotic factors are what? The abiotic factors, when you look at these abiotic factors, are the non-living factors. Non-livings, those who, and this is the living organisms which resides in the a particular area which affects and interact with the organism. So basically, when you look at how the abiotic factor and what are the abiotic factor which affect the life of an organism, okay, which present in the surrounding of that organism. One is the edaphic factor. The soil is the most important factor which affect the life of the plant as well as animals. Okay, and certain microorganism also resides in the soil. So soil type and structure, what comes under edaphic factor is the soil type and structure, soil pH and salinity, soil temperature, soil moisture, organic carbon and nitrogen content. So there are various factors. When you look at another important factor is the climate. What are the climatic factor? And we have to learn in details: temperature, sunlight, okay, atmospheric pressure, humidity, amount of water vapor present in the air, radiation and ionization of the air, chemical composition of water and atmosphere. These are climatic factors which affect the life of an organism, whether it is plant or animal, directly or indirectly. Apart from that, biotic factor. Biotic factors, these are not factors, these are competitions basically. Okay, these are the interrelationship which exist in the environment among the organism. Okay, so what are the basically biotic factors are? The plants are biotic factors. Biotic means living. The animals are biotic factors. Microorganisms, okay, are biotic factors. So basically these are the biotic factors, and these livings, okay, these living species, there are various animals and plants, and what you find, there is a relationship between the species and within the species, and these are some relationship. Further I will explain what is competition, parasitism, predation, symbiosis, and which kind of relationship it is. Okay, whether this competition is a positive relationship or positive negative relationship, whether parasitism is positive relationship or positive negative relationship or zero relationship. Okay, further I will means whether when two organisms live together, whether the both organisms helps each other, or one and organisms get benefit only, another is in disadvantageous positions. Okay, we have to learn it. Okay, when I will explain the relationship within the organism. So this is the classification, and now certain climatologists add topography also. So when we elaborate, we also include topography. So edaphic factor, topography, and climatic factor. In topographic factors, we learn how the latitudinal, when you look at how the latitude affect the distribution of plant and animal. So as you move from equatorial, means the low latitude, towards the high latitude, what you find the distribution of the flora and the fauna change along with the latitude. Why? Because the conditions gradually change. When you look at in the microtherm region, where the temperature is high, means amount of insolation received by the Earth's surface is high, which led to the increase in temperature of the Earth's atmosphere. In that conditions, when you look at, the flora is different, the fauna is different. When you look at the hyxotherm region, when you move along the polar region,
where the amount of insolation received by the Earth's surface is comparatively less, we find the different distribution of vegetations. Okay, so you have to understand it, you have to keep it in mind, and interaction I will further discuss. Okay, so if you able to remember the previous lecture, I had started with the first abiotic factor, that is light. So once you look at the light, when you observe the light, what we find that how we can define the light. Light is an electromagnetic waves, as you know. Okay, it is an electromagnetic waves, means uh, when the light process through, it's this wave process through the electric magnetic field, that field affects the path of this light. So it is an electromagnetic waves and it is transverse in nature. This wave is transverse wave, an example of transverse wave. And the light having both the wave natures as well as particle nature. So you have to keep in mind, okay, so consist of an oscillating electric and magnetic field that travels through the empty spaces, and light can travel through the vacuum also. Okay, strictly did not needs a medium. It can travel in the vacuum, it can travel in the gases, it can travel in the fluid like liquid, as well as it can travel. So basically it can travel in a different mediums, including the vacuum. It is an electromagnetic waves. Now when you look at this is the speed in the miles, okay, per second. And now, as you know, when you look at when the light passes through the prism, okay, then what you find that it is split into different colors. It is split into different colors, and when you look at these different colors, this color you can visualize. That's why this color is known as visible light. Visible light. So you can visualize the violet color, you can visualize and see the indigo, okay, blue, green, yellow, orange, red. Such colors you can recognize, okay. And that's why this wavelength, these colors having a unique wavelength, and this is known as visible light. Altogether, when you look at this color jointly, it looks what? White. So the sunlight is also known as white light. Combinedly and jointly, this color looks like white. When all the color is absorbed, the color is black. Okay. So when you look at the lights, what is the range of the wavelength of this visible spectrum? 380 nanometer to 780 nanometer. Okay, this is the wavelength, because every waves having the wavelength, as I have shared that the light is a transverse wave. So when it started propagating, it propagate like this. Okay, so it propagate like this. This is a transverse waves. So as you know, the distance between two crest, or the distance between two trough, is known as wavelength. So what I have said, that the wavelength of different band of light is different. So the visible spectrum, when you look at visible spectrum in this color of light, the wavelength is 380 nanometer to 780 nanometer. You should keep in mind. Now when you look at this color, means these wavelengths affects the life of an organism as well as plant. So how the light affects the organism's life, including the life of the plant as well as animal and microorganism, we have to learn in ecology basically. Okay, so once you look at, as you know, when you look at this radiant energy, the light, as you know, is the radiant energy. So just I had first of all define the lights.
What is light? I had said that light is a electromagnetic wave, and light having both the properties of particle as well as wave. And when the light is crosses through the uh, prism, it splits into, diffracted into the different wavelengths. So what we observe prima facie that the lights having the short wavelength as well as long wavelength. आपने दोनों देखा, क्योंकि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर 780 तक वैरी कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शॉर्ट वेवलेंथ्स भी हैं और कुछ लॉन्ग वेवलेंथ्स भी. अपार्ट फ्रॉम दिस वेव्जियोर, व्हाट आई हैव रिटेन हियर, ओके, मैंने ये लिखा, इससे भी और ये वेवलेंथ मैंने कहा कि 380 नैनोमीटर टू लेक 780 नैनोमीटर तक है. इसके बीच में इसे विजिबल लाइट कहते हैं. बट इसके बियॉन्ड भी इंफ्रारेड्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं, कॉस्मिक रेस. अभी यहाँ अल्ट्रा वायलेट है. इससे कम वेवलेंथ वाले भी शॉर्टर वेवलेंथ्स भी हैं जो अर्थ के ऊपर रिसीव्स होती हैं. एक्सरे है, बीटा रेज है, गामा रेज है. These rays are also present in the sunlight. So what I have said that when you look at incoming solar radiations, in incoming solar radiations, what we observe, short wave radiations are present as well as the long wave radiations are also present. Long waves radiations are also present. These short waves radiation and long wave radiations affect the life of an organism directly or indirectly. We have to observe this, how these wavelengths affect the life. Okay, it is what we are going to learn here in ecology. Okay, so when you look at what I have said, that the radiant energy of the sun reaching the earth's surface, okay, transformed into different forms of energy. The thermal energy create the heating effect, the mechanical energy as well as the electrical energy. So the sun energy change, if you able to remember, the sun radiant energy causes the heating effects. We call it thermal effect. When the rocks receives the insolation, the rocks get heated, the water body get heated. Okay, the water get heated, the skin of the organism is get heated. What? Because the radiant energy create the thermal effect. Okay, it also create a mechanical effect. What I have said, that mechanical effect, how it create a mechanical effect, as you know, when the light receives by the earth's surface at different places, the amount of insolation received at different places over the earth is different, because already I had discussed what are the factors which led to the differential heating. Okay, तो मैंने बताया था कि अर्थ का शेप देखो, और यहाँ पर जब इंसोलेशन रिसिव्स होता है तो इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइट्स आती हैं. बट अगर आप देखेंगे इन द पोलर एंड टेम्परेट रीजन ऑब्लिक रेज आती हैं, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यहाँ लेस है, यहाँ हाई है. तो अभी क्या होता है कि अगर आप अमाउंट ऑफ इंसोलेशन देखते हो तो इसके कारण हीटिंग सरफेस की अनइक्वल होती है, और यहाँ अगर हीटिंग ज़्यादा है तो एयर वार्म होंगे, एयर पैकेट्स ऊपर उठेंगे, कन्वेक्शंस होगा. ठीक है, द कन्वेक्शन इज हाई. इस प्लेस पर कन्वेक्शन लेस है तो यहाँ हाई प्रेशर है. ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस which creates, why the pressure difference is created, due to differential heating. And this pressure difference led to what? The movement of air, which causes a mechanical action, So what we observed that it also led to, the light led to the transformation of energy into different forms. One form is mechanical, another form is thermal, another form is electrical. Okay, so there are, the light energy can convert into different forms. Okay, and which brings about the change in the several physical process in the atmosphere and earth, and due to which there are various things which change. थर्मल इफेक्ट के कारण क्या होता है, अभी देखो वाटर सरफेस पर हीट आती है, रिसीव्स करता है, तो द हीट, ड्यू टू द हीटिंग व्हाट हैपन,
the water is converted into water vapor. Now, when the radiant energy reach to the leaf surface, the leaf get heated, and when the leaf get heated, the transpiration starts because the water which is present in the leaves started evaporating out. So, radiant energy converted, okay, into different forms and affects what? The atmospheric phenomena or the earth's phenomena, okay, and also affects the life of an organism. Now, when you look at light intensity, so light intensity closely related to the atmospheric temperature and relative humidity. When you look at, I have mentioned here and I will explain further if you look at gradually, मैं अभी इसको थोड़ा और elaborate करूँगा. और फिर यहाँ मैंने लिखा है कि the solar radiations before entering the atmosphere carries the energy at constant rate 2 calorie per centimeter square per minute. और इसको मैंने कहा था याद रखना solar constant कहते हैं. It may be asked in objective examinations also. So this amount of energy is fixed. We called it solar constant. Okay. So what I have said that the solar radiation which before entering the atmosphere carries energy. Before entering the atmosphere, because the radiant energy earlier, the sun, when sun's radiant energy crosses the vacuum, निर्वात से ट्रेवल करता है जहाँ एयर भी नहीं है. When it enters into the atmosphere, the air and other components of atmosphere are also present, aerosol, dust particle and all. फिर वहाँ बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके, इन एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ मीडियम फिर आ गया, तो मीडियम आ गया, फिर वहाँ बहुत सारी फिनोमेनाज आपको दिखाई देंगे. लाइट कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट कुछ एब्जॉर्ब होगा, लाइट कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, स्कैटर्ड होगा. तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है तो बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फेनोमेनाज स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज लाइट इज अ वेव एज यू नो. सो वेव फेनोमेनाज आपको देखने को मिलने लगती हैं वहां पर, ठीक है. और उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद वो अर्थ सरफेस पर पहुंचता है. तो अमाउंट ऑफ मैंने यहाँ बताया है कि बिफोर इंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर कैरीज दिस मच ऑफ एनर्जी इज नोन एज सोलर कांस्टेंट. सो दिस कीप इन माइंड दिस फैक्ट्स. नाउ अभी इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा. लाइट इंटेंसिटी, हाउ इट रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वंस यू लुक एट नाउ व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर, इफ यू लुक एट, मैंने लिखा है, देखो यहाँ व्हाट आई हैव मेंशन्ड, द इंटेंसिटी, क्वालिटी and duration of sunlight. First try to understand it and then I will explain further. The light intensity, the quality of the light, okay, with the light having which kind of the wavelengths, okay, the shorter or the longer, okay, in much more amounts, and the duration of sunlight. What it determines, it affects the photosynthesis first. Photosynthesis is a metabolic process which occur in the plants, those having the chlorophylls, okay. The germination of the plants as well as the flowering in the plants. So what the photosynthesis, germination and flowering affected by the intensity, quality as well as duration. अभी आपको पता चलेगा कि अभी प्लांट को तुम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो तो ये भी देखोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी बैंड ऑफ लाइट्स ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है ना. अब इतनी सारे कलर्स आ रहे हैं, उसमें से कौन से कलर्स में बेहतर फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, ये भी हम देखेंगे. क्या रेड कलर्स में ज़्यादा बेहतर फोटोसिंथेसिस होगी इफ़ द रेड कलर्स और द हायर वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट रीचिंग टू द अर्थ सरफेस, और आपको ग्रीन और ब्लू कलर की ज़रूरत है फॉर द फोटोसिंथेसिस, बेसिकली इन विच बैंड ऑफ लाइट. तो मैंने इसीलिए कहा कि इंटेंसिटी, क्वालिटी, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ये अफेक्ट करते हैं.
किन किन चीज़ों को? फोटोसिंथेसिस को, जर्मिनेशन को, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को, फ्लावरिंग, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, सो फ्लावर का ग्रोथ अगर अफेक्ट हो रहा है तो फर्दर रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए आप फ्लावरिंग आगे फर्दर the reproduction and growth, it also affected. Now in comparison, these properties of the light affect the hibernation period, migration and reproduction in animal. अब यहाँ मैंने प्लांट और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया कि प्लांट में लाइट क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहा है, जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहा है, फ्लावरिंग को, रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ को। एनिमल्स में देखेंगे तो क्या अफेक्ट कर रहा है? एनिमल्स में लाइट आपके सर्केडियन रिदम्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक को अफेक्ट करता है एनिमल्स में, स्लीपिंग साइकिल, सर्केनुअल रिदम्स को भी अफेक्ट करता है, यानी एनुअल साइकिल ऑफ लाइफ्स को भी अफेक्ट करता है, एनुअल साइक्लिक साइकिल को अफेक्ट करता है। एक तो डायोनल साइकिल को अफेक्ट करता है, डायोनल साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक एनुअल साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करता है। सो लाइट अफेक्ट्स द सर्केडियन रिदम एंड सर्केनुअल रिदम। सर्केडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक सेट होता है। जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था इंडोक्राइनोलॉजीज, तो मैंने बताया था देयर इज अ हार्मोन मेलाटोनिन which affects the circadian rhythm. ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी जो साइकिल है, आपके उठने का एक टाइम, सोने का टाइम, आपको भूख लगती है एक खास समय पर, ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय, इट इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम। डायोनल साइकिल सेट होती है, उसी तरह एनुअल साइकिल कहते हैं, सर्केनुअल रिदम, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो पीरियोडिज्म अफेक्टेड बाय द लाइट, ठीक है, कितना आवर्स ड्यूरेशन तक लाइट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड, देयर बायोलॉजिकल क्लॉक शेट। ओके, नाउ फिर मैंने कहा है अफेक्ट हाइबरनेशन पीरियड। हाइबरनेशन इज व्हाट? हाइबरनेशन इज द स्लीप where the organism what they become inactive. हाइबरनेशन में क्या करते हैं? द मेटाबॉलिज्म ग्रेजुअली स्लोज डाउन, ये कंजर्व करते हैं एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का एक मेथड से, टू अवॉइड द हार्श क्लाइमेट। इन विंटर सर्टेन ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट्स, इट इज नोन एज विंटर स्लीप, इसको विंटर स्लीप कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट या कंडीशंस नहीं है, तो उसने क्या कर लिया, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेता है और कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाता है, तो हम उसे हाइबरनेशन कहते हैं। अब कंडीशंस क्यों कंड्यूसिव नहीं है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट करते हैं। सो एम्फीबियंस, द फ्रॉक्स, एम्फीबियन में फ्रॉक्स एग्जाम्पल है, वो क्या करता है? हाइबरनेट करता है। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, इवन द बेयर, इवन द बैट, ओके, they also avoid the harsh conditions and go for the estivation and hibernation. Estivation is a summer sleep, in the extreme summer avoids by certain organism, okay, inactive हो जाते हैं, छुप जाते हैं ब्रिक्स के अंदर, मड में, ठीक है, और सरवाइव करते हैं। जैसे ही वो फेज खत्म होता है, वो हार्श इन्वायरमेंट खत्म होता है, दे बिकम एक्टिव, और फिर वो चूँकि उनका टाइम पीरियड एक्टिवनेस का कम होता है, उसी बीच में वो फीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एनिमल के टर्म में लिखा है हाइबरनेशन पीरियड, ओके, द लाइट अफेक्ट्स द हाइबरनेशन पीरियड, एस्टिवेशन पीरियड, एज वेल एज माइग्रेशन. Some birds migrate, some fishes migrate, some animals migrate to avoid the harsh climate. So light also regulate the migration. When you look at the example of Siberian crane came to India in the winter to avoid the harsh condition in Siberia. In Siberia, the winter is very severe.
So to avoid that, they reached to India. Okay, the Keoladev National Park or Bharatpur Bird Sanctuary is very famous for Siberian crane. So basically, the migration is also, the light affect the migration. Further, I will discuss, as well as the reproduction of an organism is also affected. How the organism reproduction or the animal's reproduction affected by the light. We have to understand it in ecology, because how this ecological factor affect. Now, what I have mentioned here, that plant utilizes sunlight to perform photosynthesis. I have mentioned here. So, in the presence of the lights, that is the solar energy, it converted into chemical energy. In my previous lecture, what I have said, that the inorganic material which is present in over this planet Earth and its surroundings, the plant utilizes this inorganic material with the presence of light, because they have chlorophyll as a catalyst, and with the help of this light and chlorophyll, they fix this into an organic molecule. Okay, so the radiant energy converted into the what? This bond energy, the chemical energy. Okay, and as a result, the byproduct is the water as well as oxygen is also. So here the radiant energy, in this process, the radiant energy is converted into the chemical energy. And this chemical energy now fixed in the plant utilizes for their shell, for their growth and reproduction, because unko energy chahiye continuously. So whenever they use this, they utilizes it, it breaks down and gives the energy, okay, in the form of ATP. Further, the living organism like animals, those who are depend on the plants, are known as what? Herbivores. So herbivores in this ecosystem, those who directly dependent on the plant, what? They get the energy from this chemical, this radiant energy which converted into this chemical energy. These animals also utilizes this energy. They are dependent on this and they use it by having it, known as the herbivores. Their requirement of energy fulfilled by this. Okay, and over the herbivores, the primary carnivores dependent, over the primary secondary carnivores dependent. Okay, so like in ecosystem, one organism is dependent on other, but these plants having only capacity to fixed the inorganic materials in the presence of the radiant energy into a chemical energy in the form of glucose. Okay, and that's why they are known as producer, I have shared. Okay, now, so what I have said, that energy get passed on the herbivores, and when they consume the plants, herbivores, when they consume the plants and plant product, the energy transfer from here to here, from here to here, primary, secondary, tertiary. So what we find, that in ecosystem there is transfer of energy from producer towards the top carnivores. Okay, so what we find, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो जब मैं डिस्कस करूंगा इकोसिस्टम फंक्शन, तो मैं आपको एनर्जी पिरामिड भी समझाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है. वहाँ हमें ये भी देखना होगा, एनर्जी मैकेनिक्स भी देखना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि क्या एनर्जी जितना प्लांट्स के अंदर रीस्टोर्ड है, फिक्स्ड है, क्या उतनी इक्वल एनर्जी ही जब हर्बीवोर्स खाता है तो उसमें ट्रांसफ़र होता है, या कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है. तो हमें थर्मोडायनेमिक्स भी देखना होगा, हमें देखना होगा हाउ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हर्बीवोर्स. ओके, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, एंड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचा.
तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर यानी ऐसे एनिमल जो हर्बीवोर्स हैं, जो खा रहे हैं प्लांट को, फिर वहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर्स हैं, और वहाँ से टर्शरी कंज्यूमर में जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या 100% एनर्जी अगर बॉडी में फिट रिस्टोर है तो क्या जो खा रहा है उसमें भी 100% जा रहा है या एनर्जी लॉस हो रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर भी थ्योरम है. देयर इज अ गॉसेस थ्योरम, देयर इज अ लिंडमैन रूल. सो वी हैव टू लर्न दैट, हमें वो पढ़ना होगा, समझना होगा. बट ऑर्गेनिजम्स linked to each other through the energy. Okay, so what you find? The movement of energy, and through this energy transfers modes, the one organism is associated with another organism. तो एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. अब उसकी एफिशिएंसी कितनी है, इफेक्टिवनेस कितना है, ये भी हम लर्न करेंगे एनर्जी एफिशिएंसीज के. तो ये मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की. अब लाइट्स के बारे में इन जनरल देखें विथ रिलेशन टू प्लांट. आई थिंक आई हैड ऑल्सो गिवन यू अ बेसिक्स आइडिया. अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि द लाइट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द chlorophyll production, and this chlorophyll which is present in the plants, because in the plants what I have said that the green part of the plants like the stems, okay, and the leaves, this green part of the plants having a cell organelle. This cell organelle is known as chloroplast. Chloroplast. There are various type of plastid, one among them cell organelle में एक को हम कहते हैं plastids, और plastids जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसमें एक है क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स है, ये जो प्लास्टिड हैं जो कि किस सेल के अंदर रहते हैं, जैसे दिस इज द प्लांट शेल which is covered by the shell wall. This is cell wall, and this is the cell membrane. In plant cells, we observe two outer layer, cell wall, shell membrane, and then what we observe that in plant cells, if you look at, there is a vacuole. एक बीच में space होता है, उसे हम vacuole कहते हैं, and nucleus is somewhere in the side in the plant shells. And apart from that, there are various cell organelle are present like mitochondria or Golgi and something. Okay, there are various. Out of that, there is a double membranous structure which is present. We called it chloroplast. Okay, chloroplast कहते हैं इसमें. So when you look at the chloroplast having the grana और thylakoid, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी में ग्रीन पिगमेंट होता है. पिगमेंट दोज हु प्रोवाइड कलर्स, ठीक है ना. ये ग्राना या थैलेक्वाइड, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी इनके ये जो डिस्क लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उनका कलर ग्रीन होता है क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट हियर. So in the chloroplast, in the grana or the thylakoid, what you find in the grana or thylakoid, you observe the chlorophyll. यहाँ chlorophyll होगा, that is a green pigment which provide green color to the leaf or the stems. And this chlorophyll is responsible for photosynthesis. और ऐसे ऐसे मैंने बनाया है यहाँ लाइन से, इसको लैमेले कहते हैं. और यहाँ पर स्ट्रोमा भी होता है, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इस तरह से डिस्क ऐसे अटैच्ड होते हैं इस लैमेले के थ्रू. एक डबल मेम्ब्रेनस आउटर कवर होता है यहाँ पर. तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का. इसके अंदर इसी ग्राना के ऊपर
ये पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं। सो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेडिएशंस आना चाहिए, तो क्लोरोफिल डेवलप होंगे। Otherwise, when the proper amount of light is not received, the chlorophyll don't develop and the leaf become pale yellow. वो धीरे धीरे येलोइश होने लगता है, क्योंकि पिगमेंटेशंस नहीं हो पाता, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्लांट में क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, बोला क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, दिस आर द सेल ऑर्गेनेल, सेल का एक पार्ट है, सेल का एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। और क्लोरोफिल के फॉर्मेशंस के लिए भी लाइट जरूरी है, अदरवाइज लिफ पर इंपैक्ट दिखेगा आपको। लाइट नहीं मिलेगा तो लिप्स येलोइश होने लगेंगे, लेस पिगमेंटेशन होगा और वो ग्रीन नहीं होगा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अलावा और भी तरह के प्लास्टिड होते हैं। कई बार आपको लीफ रेड कलर के नज़र आते हैं या फ्रूट्स लाल होता है, तो हम उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है तो कलर्ड पिगमेंट होगा अदर देन ग्रीन, रेड। ल्यूकोप्लास्ट है तो कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, वाइट कलर होता है। आपको टमाटर वाइट भी दिखाई देते हैं, लिप्स वाइटिस भी होते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी पिगमेंट नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट है वहाँ। सो प्लास्टिड आर ऑफ वेरियस टाइप्स इन द प्लांट, बट मेरा यहाँ पर है कि मैं अभी क्लोरोफिल के ऊपर क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहली चीज है कि लाइट की जरूरत है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी, सिंथेसिस के लिए भी। और जब क्लोरोफिल प्रॉपर अमाउंट में प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में अवेलेबल होता है, क्योंकि इसके कारण ही ग्रीन आपको दिखाई देता है स्टेम या लिफ, क्लोरोफिल के कारण, मैंने अभी कहा। और यही क्लोरोफिल जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फिर केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिसमें मैंने कहा कि CO2 जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वाटर जो प्लांट लेते हैं सॉइल के थ्रू, विच इज अवेलेबल इन द सॉइल पोर्स, so they absorb that with the help of roots, okay, and they forms the organic compound that is glucose, okay. That process is known as photosynthesis. Synthesis means formation, photo means light. In the presence of light, the inorganic substance converted into the organic one. तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि क्लोरोफिल प्रोडक्शंस में भी लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में तो है ही। ओके, नाउ एज आई हैव सेड, हीटिंग एक्शन। अभी आपने सुना होगा कि देयर इज अ फ्रॉस्ट बाइट in the winter. What you find that in the pores of the leaves or in the leaves the water frozen, and that causes the desiccation effect. आप कहते हैं पौधे को पाला मार दिया, okay, there is a frost action. उससे क्या होता है, the growth is stunted, germination and the flowering is affected. So light also create what, the thermal effect, and a specific temperature is required for the growth and development as well as flowering and fruitings of the plant. So light creates a thermal effect, heat effect create करता है, जो कि जर्मिनेशन के लिए। अभी आप कहते हो कि इंडिया में जब आप देखेंगे, हम जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर में there are 3 type of crops depend on the seasonal growth and development, the rabi, kharif and जायद। तो यहाँ क्या है, आप क्या देखते हो, डे लेंथ यहाँ पर डिटरमाइन करता है कितने टाइम सनलाइट रीच करती है। खरीफ क्रॉप कब आप ग्रो कर रहे होते हो, कब उसको उसका शोइंग सीजन स्टार्ट होता है, इन समर, इन अर्ली समर। So that requires the much more light and the high temperature, okay. So thermal effect, the light creates the thermal effect. रबी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए हीटिंग, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन लेस चाहिए इन द शोइंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन में अभी जब हार्वेस्ट करेंगे रबी क्रॉप को,
ठीक है, इन द मंथ ऑफ द मार्च। तो वहाँ पर क्या है, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट बढ़ जाता है। तो क्या है कि लाइट ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट, द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, द development of flowers, germination of seeds, as I have said time and again, because light also create a thermal effect which protects the organisms, okay, the animals as well as plants in a particular area. तो मैंने यहाँ ये बताया, but it also affects the life of the plant, so thermal impact or action. दूसरा है effect on transpiration rate. तो मैंने कहा if the amount of insolation is high, the radiant energy reaching the earth's surface is in the high amount, then what, the rate of transpiration is high. When the amount of radiant energy received by the earth's surface or the plant surfaces, leaves and stems is less, the rate of transpiration is rate. Transpiration occur by the plants. Okay, because the plants having stomata on the leaf, on the leaves, and the new stems, जो नए पतले से स्टेम्स होते हैं ग्रीन, उस पे भी होते हैं, बट लार्जली ऑन द लीव्स। ओके, अब इसमें भी आप देखेंगे कि प्लांट में डिफरेंट एडेप्टेशन होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कंजर्व करने के लिए। जब आप जाओगे इन द डेजर्टिक एरिया, तो lips modified into thorn or lips are very small and largely the stomata present on the lower side of the lips, not on the upper side of the leaf. ठीक है, तो कई वेरियस एडेप्टेशंस वी ऑब्जर्व, हमें कई एडेप्टेशन भी मिलते हैं। मैं बाद में वो एडेप्टेशन बताऊंगा आपको कि टेरेस्ट्रियल रीजन में प्लांट में क्या एडेप्टेशन है और एक्वेटिक रीजन में जब प्लांट पानी में रहते हैं तो उनने क्या एडेप्टेशन डेवलप कर रखा है। ठीक है, so stomatal movement is also affected by the light. Stomatal movement means the opening of stomata and closing of stomata is known as stomatal movement. So it depends on the duration and intensity of light. कितने समय के लिए लाइट लिफ्ट के ऊपर रीच कर रहा है और कितना अमाउंट है आ रहा है सरफेस के ऊपर, इस पर डिपेंड करता है स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके अनुसार रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी गाइड होता है। Then distribution of plant, the light also affect the distribution of plant. When you move to the equatorial region, in equatorial region what we find that the amount of insolation received on the earth's surface around the year is high comparatively, and as a result what we find, the thermal effect, the temperature of the earth's surface and earth atmosphere is also high, as well as further because the rate of transpiration in equatorial region as well as rate of evaporation is also high, so the cloud condensations takes place, as a result of which in equatorial regions what you observe, the 4 o'clock rain, हर इवनिंग बारिश हो रही है, उसको कहते हैं 4 o'clock rain। ठीक है, so what you find in this region, in equatorial region, less green vegetation, we call that vegetation equatorial rainforest or simply rainforest. What is the feature of equatorial rainforest when you look at where the amount of insolation received by the earth's surface is comparatively? We observe the gallery forest. Equatorial rainforest का नेचर कैसा होता है, गैलरीज फॉरेस्ट कहते हैं हम उसे। उसमें क्या तुम्हें दिखाई देता है, डिफरेंट स्ट्रेटा, जो हाइट होगी प्लांट की वो अलग अलग होगी। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज अमंग द प्लांट देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर द लाइट, द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस, इतना डेंस फॉरेस्ट ग्रो करता है वहां की लाइट अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाती। तो उस रीजन में कुछ प्लांट हीलियोफाइट्स भी होंगे जो कि ज्यादा लाइट जिनको चाहिए, तो उनकी अगर लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, तो सनलाइट उन तक नहीं पहुंचेगी। कुछ सीओफाइट्स भी होंगे जो शेड एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। तो व्हेन यू मूव टू द इक्वेटोरियल रीजन, व्हाट यू फाइंड दैट ऑन द सरफेस देयर आर ग्रासेस, वेरियस variety of grasses are there. That area is very humid,
बिकॉज मैंने कहा प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पर, हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज देयर, हैवी प्रेसिपिटेशन। तो तुम क्या देखते हो, इक्वेटोरियल रीजन में लाइट के लिए कंपटीशन है, देयर इज अ कंपटीशन फॉर द लाइट, ओके, अमंग द प्लांट। तो व्हाट यू फाइंड, वेरियस स्ट्रेटा ऑफ प्लांट्स ग्रो देयर। कंपटीशन को अवॉइड करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको एडेप्टेशन करना होता है, ठीक है, टू सर्वाइव इन अ कंपटीशन। सो प्लांट हैविंग डिफरेंट हाइट, वी कॉल्ड इट गैलरी फॉरेस्ट। तो मैंने बताया आपको कि कुछ वेरी टॉल ट्रीज आर प्रेजेंट, now mediums height of the trees, then you find the shrubs, the herbs, as well as the grasses. Apart from that, some climbers are also there. कुछ तो ऐसे होते हैं पौधे जो पेड़ों की स्टेम को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है, जैसे लौकी का पौधा आप ऊपर लेके चले जाते हो, तो ये क्लाइंबर्स, तो इस तरह के क्लाइंबर्स नेचुरली वो ग्रो कर जाते हैं और पौधे को पकड़ के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इनको लाइट चाहिए होता है। ये सरफेस पे रहेंगे तो लाइट नहीं रीच करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये पौधे डाई करेंगे स्टारवेशन में। तो इन्होंने क्या किया, लाइट को लेने के लिए ये क्लाइंबर्स हैं, इन्होंने पकड़कर और पेड़ों के ऊपर चले गए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ईपीफाइट्स का ऑर्किड। अच्छा, ऑर्किड एक ईपीफाइट्स है, वो पौधे के ऊपर ग्रो करता है, पौधे के ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करता है ऑर्किड्स। दिस इज द ईपीफाइट्स, ये टहनियों पे ग्रो करता है, इट्स नॉट अ क्लाइंबर, it is an example of epiphytes, it's grow over the branches of the trees, this kind of plant, the example is orchid। तो ये क्यों है, ऐसा कंडीशंस क्यों क्रिएट हुआ, फॉर द कंपटीशन ऑफ द लाइट, बिकॉज लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, सो फॉर द लाइट दे आर इन कॉम्पिटिशंस। जो कम लाइट्स जिनको चाहिए वो तो नीचे भी ग्रो करेंगे, बट जिनको ज़्यादा चाहिए दे ग्रेजुअली इंक्रीज देयर height। So what we observed at this kind of vegetations where we find different strata of plant, it is known as gallery forest। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, आपको ऐसा दिखाई देता है। बट अमाउंट ऑफ इंसोलेशंस अभी नेक्स्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स भी अफेक्ट होता है, आप देखेंगे इसके कारण ओवरऑल वेजिटेशन डेवलपमेंट। तो इन वेरियस वे द लाइट अफेक्ट्स द प्लांट। अब फिर याद करो लाइट्स के अकॉर्डिंग्स, फिर मैंने प्लांट्स को डिवाइड किया, हीलियोफाइट्स, जियोफाइट्स। द प्लांट्स विच ग्रो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड in presence of sufficient amount of light are known as heliophytes। So such plants needs the proper duration of the light, the high amount of insolations, okay, known as heliophyte। So what I have mentioned here in the definition, they grow best in the full sunlight and they have higher respiration rate and maximum temperature optima for photosynthesis। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑप्टिमा पता है, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर ऐसे देखेंगे, लाइट इज ऑल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इज ऑल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर? वंस यू लुक एट द लाइट, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, रेडिएंट एनर्जी इज लेस, सर्टेन प्लांट वोंट ग्रो, कांट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। they needs a particular intensity of light and day length, यानी कितना देर तक वो रीच करता है। if you increase the amount also, then certain organisms growth or the plants growth also affected। so this range
is the optimum range for growth and here the growth and reproduction is high. हम इसे कहते हैं ऑप्टिमम रेंज. इधर लेस है, इधर हाई है. सो लाइट इज ऑल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर. मैं अभी लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसे कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस. और इसका कर्व कैसा बनता है? बेल शेप्ड. इसे क्या कहते हैं? घंटी होती है ना, घंटी जो टंगी होती है जिसे बजाते हैं, तो इस घंटे के तरह से इसको कहते हैं बेल शेप्ड कर्व. ये कर्व क्या डिटरमाइन करता है? रेंज ऑफ टॉलरेंस, कि कोई एनिमल या कोई प्लांट किस रेंज को बर्दाश्त कर सकता है और किसको नहीं कर सकता. अगर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन या रेडिएंट एनर्जी या लाइट जो है रिसीव्स जो किया जा रहा है प्लांट के द्वारा या एनिमल्स के ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरत है उससे कम होगा तो ग्रोथ अफेक्ट होगा, या ज़्यादा भी होगा तब भी ग्रोथ अफेक्ट होगा. सो एनीथिंग मिनिमम or anything maximum is harmful for the growth of a livings, whether it is plant or animal. So it determines the range of tolerance. तो मैं बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इलेबोरेट करूंगा कि हाउ वी कैन बिल्ड द ग्राफ विद द प्रॉपर एग्जाम्पल, बट मैंने यहाँ दिया. ठीक है कि अगर आप एक्वेटिक रीजन में जाते हो, व्हेन यू मूव टू द एक्वेटिक रीजन्स, अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जाते हैं तो टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए. अगर आप देखते हो डेसिडुअस वेजिटेशन, डेसिडुअस वेजिटेशंस कहाँ आपको दिखाई देते हैं? इन द ट्रॉपिकल रीजन. इन द ट्रॉपिकल रीजन द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस. And when you look at the amount of precipitation is what? From 75 to 150 centimeter. Okay, the amount of precipitation. Where the amount of precipitation is high in the tropical region, what we observe? The moist deciduous forest or the wet deciduous forest. What you observe? When the amount of precipitation is less, what you find at? The dry deciduous forest. तो किससे अभी तुमने क्या देखा? अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशंस पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट पर भी डिपेंड कर रहा है. समर सीजन में जब डे लेंथ बढ़ जाता है और इंसोलेशन हाई हो जाते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, लाइट यहाँ पर, तो क्या करते हैं? पौधे पत्तियां गिरा देते हैं. इसीलिए हम उसको कहते हैं डेसिडुअस, टू कंजर्व द वाटर. तो लाइट का ड्यूरेशंस अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट को. कौन सी स्पीसीज होगी ये देखकर पता लग जाता है किसी एरिया में. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कितना होगा. व्हेन यू मूव टू द हिली एरियाज, व्हेन यू मूव टू द पोलर रीजन्स, यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ डे लेंथ कैसे अफेक्ट कर रहा है. फोटो पीरियोडिज्म हाउ अफेक्ट द लाइफ ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स. ओके, यू कैन फाइंड आउट. तो यहाँ मैंने कहा कि हीलियोफाइट्स वैसे पौधे हैं जिनको कि क्या चाहिए? बेस्ट सनलाइट चाहिए, ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तब ये ग्रो कर पाते हैं. मैंने यहाँ लिखा है दिस प्लांट्स आर कॉमन इन रॉक्स, मेडोज यानी ग्रासलैंड्स, एंड माउंटेन पास्चर्स, ओपन टेरेन्स, ग्रासलैंड्स विच आर एक्सपोज टू द सन. ओके, exposed to the sun. Few example I had quoted here of the heliophytes. Okay, mint, pudina. Okay, thyme, white clover, roses, ling, mullein. Okay, soft velcro. These are some example of a हीलियोफाइट्स. ये कुछ एग्जाम्पल है हीलियोफाइट्स को कि ऐसे पौधे तभी ग्रो करेंगे जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट रीच करेगा सरफेस के ऊपर. ओके, स्पेशल फीचर क्या है हीलियोफाइट्स का? थोड़ा टेक्निकल है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर देयर, उसमें जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं आपको समझाऊँ. इज द प्रेजेंस ऑफ, what are the features you find in the plants those who are heliophytes best grow in the sunlight? What kind of features? The coarse tiny leaves, यानी the surface of the leaf is coarse, थोड़ा रफ होगा, लीफ छोटे होंगे. ओके,
विथ वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग क्यों है? क्योंकि वैक्स इज अ इंसुलेटर, वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करता है। जब आप डेजर्टिक एरिया में जाएंगे, जेरोफिटिक प्लांट्स के लीफ को टच करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे जेरोफाइट्स हैं जिनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करता है। वैक्स इज अ इंसुलेटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इंसुलेशन का अमाउंट सरफेस पर आ रहा है, तो हीटिंग लीफ की कम होती है इसके कारण। उसी तरह वैक्सी कोटिंग आपको एक्वेटिक प्लांट में भी दिखाई देगा। वैक्स इज अ वाटर रेपेलेंट, ठीक है ना। मोम हाथ में ऐसे कर लो और फिर उसको टच करो, बिकॉज तो उससे क्या, वाटर रेपेलेंट है। एक्वेटिक प्लांट की लीफ को आप टच करेंगे तो वो स्मूथ दिखते हैं, चिकने दिखते हैं, उस पर वैक्सी कोटिंग होती है, क्योंकि उनको पानी के ऊपर रहना होता है हमेशा, तो वाटर रेपेलेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो सड़ जाएंगे। तो बहुत सारे एडेप्टेशन। तो मैंने यहाँ क्या कहा कि जो हेलियोफाइट्स हैं, हेलियोफाइट्स की लिफ जो देखोगे, कोर्स होगा, रगेड होगा, रफ होगा, और टाइनी होगा, स्मॉल होगा, और वैक्सी इसके ऊपर कोटिंग होगी। टाइनी होने का भी मतलब है क्योंकि सनलाइट ज़्यादा आ रही है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा, तो लिफ जितना बड़ा होगा सरफेस एरिया के अनुसार, फिर उसके ऊपर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, तो लिफ की साइज छोटी है। एंड हेयरी प्रोटेक्शन, हेयर इज ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, तो हेयरी प्रोटेक्शन। एंड दिस कोटिंग एक्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव लाइट रेडिएशन। मैंने यहाँ लिखा है कि ये कोटिंग क्यों है, एक्सेसिव लाइट रेडिएशंस के लिए, एंड टू कंजर्व द वाटर लॉस, वाटर लॉस से बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द हेलियोफाइट्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ये आपको फिनोटिपिक अपीयरेंस दिखेगा, यानी देखते ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा दिस इज द हेलियोफाइट बिकॉज सच काइंड ऑफ आउटर अपीयरेंस यू ऑब्जर्व। फिनोटिपिक अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, आउटर, जो बाहर से आप दिखते हैं। जीनोटिपिक अपीयरेंस का मतलब होता है जीन्स। तो जीन्स के लिए आपको जेनेटिक कॉम्पोजिशन पढ़ना होगा, वो बाहर से नहीं पता लगेगा, उसके लिए हमें डीएनए और जीन्स की स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप भी समझना है, यूज करना है टर्म्स। तो फिनोटिपिक अपीयरेंस मीन्स आउटर अपीयरेंस, ठीक है। जीनोटिपिक्स मीन्स द अमाउंट ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट, ओके, विद इन द ऑर्गेनिज्म, वो है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लिप्स यूजुअली वेरीज विद द डबल पैलिशेड लेयर्स। अभी क्या होगा कि अब ये पैलिशेड पैरेन्काइमा क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, आपको ये नहीं जानना। तो लिफ में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक लेयर्स होता है सेल्स की, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज द टिश्यूज। तो यहाँ डबल लेयर्स है, ठीक है, पैलिशेड की डबल लेयर्स है। अब इसके पीछे भी क्या है, क्योंकि यहाँ हीटिंग ज़्यादा होगा तो कंजर्व करना है, ये सारे मैकेनिज्म हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के। तो ये मैंने हीलियोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताया, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए, मैंने ये डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज द हीलियोफाइट्स। ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स of the heliophytes, the chloroplast of the heliophytes contain what, the protective elements such as carotenoids. It is a pigment, okay, enzymes and reactive oxygen species to avoid any toxic effect. अब देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ हीलियोफाइट्स। मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड, इज अ सेल ऑर्गेनेल which is present, where it is present in the plant, okay, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लांट और एल्गी, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब वो जो हेलियोफाइट्स हैं वहाँ पर क्या है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बॉडी के अंदर, उससे बचाने के लिए उसमें एक स्पेसिफिक लेयर है कैरोटीनोइड्स की, स्पेसिफिक एंजाइम है, एज वेल एज क्या है, द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, विच इज नाउ
Stomata and the green shoots are also present on the leaves to facilitate efficient gas exchange, and these also help to increase the possibility of photosynthesis. अब देखो, शूट्स के ऊपर, शूट्स यानी स्टेम के ऊपर और लीफ के ऊपर, दोनों के ऊपर एस्टोमेटा भी प्रेजेंट है. एस्टोमेटा मैनेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ऑल्सो the water, as you know, is very important for the photosynthesis, because for photosynthesis two kind of inorganic compound is required. One is carbon dioxide and another is water, and the stomator regulate the amount of water because it regulate the rate of transpiration. The stomatal movement control the rate of transpiration. So this plant having mechanism to control the rate of transpiration and thus of course the rate of photosynthesis. Okay. And now the heliophytes also have high light compensation point, and this feature require the higher illumination intensity of an effective adsorption of the carbon dioxide, and leaves of the heliophytes have a higher basal metabolism compared to the other leaf. इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लार्जर ड्यूरेशन में लाइट चाहिए, कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट आएगा तो इनका कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. तो सिंपली हायर कॉम्पनसेशन पॉइंट होने का मतलब क्या है, लेमैन टर्म में हम अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, जो लीफ के ऊपर आना चाहिए लाइट, वो ज़्यादा टाइम के लिए आना चाहिए, तभी जाकर फोटोसिंथेसिस ये कर पाएंगे. अगर लो टाइम पीरियड के लिए लाइट्स इनके सरफेस पर आते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. तो ये है हीलियोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. अगर आप देखेंगे कुछ पौधे, सो दीज आर सम प्लांट्स विच आर हीलियोफाइट्स. ओके, दोज हु कैन ग्रो बेस्ट इन द सनलाइट. ओके, दीज आर द हीलियोफाइट्स. व्हेन यू लुक एट द सियोफाइट्स, दीज आर द प्लांट्स which are known as pseophytes. Pseophytes are such plants which can grow better in the shades. They are shade loving plant. इनको कम लाइट चाहिए. ज़्यादा लाइट होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, इनके लिए कम लाइट चाहिए. दे ग्रो बेस्ट इन द लो सनलाइट एंड दे हैव फोटोसिंथेटिक, दे आर लो फोटोसिंथेटिक रेट, लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन. जबकि हीलियोफाइट्स में हाई फोटोसिंथेटिक रेट, ओके, और रेस्पिरेटरी रेट भी था. यहाँ पर वहाँ पर क्या था, वाटर कंजर्व करने के लिए प्लांट ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि वहाँ लाइट ज़्यादा ड्यूरेशन तक लाइट है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हाई होगा. यहाँ ऐसा नहीं है. ठीक है, तो सियोफाइट्स शेड लविंग प्लांट मैंने कहा इसे कहते हैं, या शेड ट्री कहते हैं. एग्जाम्पल मैंने दिया है पेपर, ठीक है ना, जो काली मिर्च होती है, पेपर. ओके, एंड कोकोआ, कॉफ़ी, जिंजर, अदरक, कॉफ़ी, कोकोआ, ठीक है, और पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च या गोल मिर्च जिसे कहते हो तुम. तो ये जो है एग्जाम्पल है शेड लविंग. शेड लविंग प्लांट्स जो देखोगे, इनके इंटर नोड्स देखो, यहाँ से लीव निकली है, ये नोड्स है, गांठ होते हैं स्टेम के ऊपर ऐसे, यहाँ से अपीयरेंस ऑफ लीव्स होता है, और फिर यहाँ नोड्स है, यहाँ से लीफ अपीयर है. ठीक है, इन दोनों नोड्स के बीच के गैप को इंटरनोड्स कहते हैं. इन द सियोफाइट्स को देखोगे तो इसमें जो ये इंटरनोड होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द सियोफाइट्स? द लेंथ ऑफ द इंटरनोड इज हाई. इनका इंटरनोड हाई होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. अभी मैंने पीछे हेलियोफाइट्स के कैरेक्टर्स बताए थे कि बाहरी अपीयरेंस, उसमें लीफ छोटा होगा, उसमें लीफ रफ होगा, ठीक है, वैक्सी कोटिंग होगी, हेयर्स होंगे लीव्स के ऊपर, ये मैंने बताया था. यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाय फिनोटिपिक अपीयरेंस. यहाँ इंटरनोड यानी दो गांठों के बीच का जो लेंथ है स्टेम्स के ऊपर, जिस जहाँ से लीफ ग्रो करते हैं, वो लेंथ है, वो बड़ा है, वो लंबा है. ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो सियोफाइट्स, ठीक है, ये देखिए, ये सियोफाइट्स हैं. ठीक है, दीज आर द सियोफाइट्स. अभी देखो, तो ये मैंने आपको सियोफाइट्स के बारे में बताया कि सियोफाइट्स के एग्जाम्पल कुछ आपने यहाँ देखा. ये शेड लविंग ट्री हैं, इनको ज़्यादा नहीं चाहिए सनलाइट. अब मैंने एक वर्ड आपको बताया था, फैकल्टेटिव सियोफाइट्स.
जब वर्ड फैकल्टेटिव लगता है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, जब वर्ड यूज करोगे ऑब्लिगेट सियोफाइट्स तो वो हमेशा शेड लविंग होंगे. बाय ऑब्लिगेशन दे आर अवॉइड द लाइट एंड नीड्स लेस सनलाइट. तो ऑब्लिगेट सियोफाइट वर्ड आएगा या सिंपली सियोफाइट्स मीन्स दे आर शेड लविंग. They can properly grow in the low sunlight. When the word is obligate heliophytes, it means that they needs more sunlight. Okay, they best grow in the proper sunlight, are known as obligate heliophytes or simply heliophytes. But जब facultative word use होता है तो change हो जाते हैं meanings. ठीक है, facultative sheophytes they grow best in sunlight. हीलियोफाइट्स की तरह ये बेस्ट ग्रो कर सकते हैं सनलाइट में, बट इनको हीलियोफाइट्स क्यों नहीं कहते, फैकल्टेटिव सियोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि दे कैन ग्रो फेयरली वेल इन शेड्स आल्सो. ये शेड्स में भी ग्रो कर सकते, इसलिए वर्ड है फैकल्टेटिव सियोफाइट. अगर सिंपली मैं लिख देता कि दे ग्रो बेस्ट इन द सनलाइट, यहीं पर फुल स्टॉप लगा देता तो यहाँ हो जाता हीलियोफाइट्स. दैट डेफिनेशन बिकम द डेफिनेशन ऑफ हीलियोफाइट्स. बट यहाँ आगे ये भी लगा है कि बट कैन ग्रो इन फेयरली वेल अंडर द शेड्स. एग्जाम्पल आर द मैपल ट्री, द बीच ट्री, द स्प्रूश, द फर, हेमलॉक्स. इंडिया में कहाँ दिखते हैं ये ट्री? व्हेन यू मूव अलोंग द हिली एरियाज. ठीक है ना, हिमालयन जोन में जाओगे तो ये पौधे तुम्हें दिखाई देंगे. ये पौधे, इनमें खासियत क्या है, ये सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और कम ड्यूरेशन आए लाइट की तब भी ये ग्रो कर सकते हैं. ये फैकल्टेटिव शियोफाइट्स हैं. ठीक है, दूसरा है फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स. दे ग्रो बेस्ट इन द लोअर लाइट. अगर मैं यहीं फुल स्टॉप लगा देता तो ये सियोफाइट्स हो जाता, क्योंकि सियोफाइट्स कैन ग्रो बेस्ट इन द लो लाइट. बट यहाँ वर्ड है फैकल्टेटिव हीलियोफाइट. वाई? बिकॉज दे कैन ग्रो इन द फुल सनलाइट ऑल्सो, लाइक पाइन, द सॉफ्ट मैपल, द विलोज ट्रीज. इनसे बैट भी बनाए जाते हैं विलोज की लकड़ियों से. टुलिप, लार्चेज, ओके, ज्यूनिपर्स. These are an example of the facultative heliophytes. इसका मतलब है ये शेड में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लाइट मिली तब भी ग्रो कर जाएंगे. ये लाइट में ग्रो करते हैं बट शेड है तब भी ये ग्रो कर जाएंगे. तो ये पौधे आप इंडिया में इसको कहाँ देखते हो? तो इन द हिमालयन जोन, व्हेन यू मूव अक्रॉस द हिली एरिया, देन यू फाइंड such kind of a tree. Okay, so this is an example. Now another concept is photoperiodism. Photoperiodism means how much hours the earth receives or the plant receives the sunlight is known as photoperiodism. Okay, so what I have mentioned that the total length of daylight period to which the plant are exposed. कितने घंटे के लिए प्लांट एक्सपोज्ड हो रहा है लाइट से, that is photoperiodism. तो उसके आधार पे प्लांट को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द शॉर्ट डे प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप नॉर्मली व्हेन द फोटो पीरियड इज लेस देन अ क्रिटिकल 12 to 14 आवर्स मैक्सिमम है. तो लेस देन क्रिटिकल अगर ये पौधे को लाइट मिल रही है तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट. एग्जाम्पल है दतूरा. ठीक है ना, दतूरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल. अब ये बॉटनिकल नेम है, ठीक है, एस्ट्रोमोनियम, दतूरा एस्ट्रोमोनियम. शाल्विया अनदर प्लांट, ओके, उसका बॉटनिकल नेम है. तो आपको शाल्विया याद रखा है. कैनाबिनिस सटाइवा, एंट्रोपोगन. ठीक है ना, दीज आर द प्लांट्स, दीज आर नोन एज शॉर्ट डे प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट डिमांडिंग एक्सेस टू द सर्टेन क्रिटिकल मिनिमम. इनको जो क्रिटिकल है उससे क्या चाहिए? इससे कम चाहिए. जो क्रिटिकल है इससे ज़्यादा चाहिए इनको. ठीक है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? लॉन्ग डे. नाइगीला इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, शॉर्गम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ अ प्लांट. लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी और लाइट कितने देर के लिए सरफेस पर आ रही है, हाई
टाइम के लिए आ रही है, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रही है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, दे कैन ग्रो इन एनी इंटेंसिटी एंड एनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये एनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट में ग्रो कर सकते हैं, ये इनको डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू कंडीशंस, नहीं इनको क्रिटिकल से कम चाहिए ना क्रिटिकल से ज़्यादा चाहिए, दे कैन ग्रो बेटर इन कंडीशंस। द पोटैटो, शोलेनम ट्यूबेरशम इज द बॉटनिकल नेम, और निकोटीना टबाकम, द टोबैको, तंबाकू का पौधा, आलू का पौधा, डिपेंड नहीं करता कि डे लेंथ हाई है या लो है, यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम समय के लिए आ रही है या ज़्यादा समय के लिए, ये ग्रो कर सकते हैं। सो फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पर यू कैन कैटेगराइज द वेजिटेशन इनटू 3 टाइप्स, द शॉर्ट डे प्लांट, द लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल। एग्जाम्स में क्या आएगा, इन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन आएंगे, एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू क्रैम द एग्जाम्पल एज वेल एज डेफिनेशन हियर, आपको यही याद रखना है।